लास्ट क्लास हम कौन पढ़ते पोलार फॉर्म राइट till now anyone has any doubts before starting okay let's start you can put your doubt ask your doubts in group also or personal to me okay so polar form हम पढ़ले right polar form कौन को आला z is equal to x plus iy ताले z का कौन लिख पे हमें r into cos theta plus I sin theta right and where r is equal to mod z and theta is equal to argument z or amplitude z right or principal argument there theta का कौन theta का सब बोले minus pi to pi लिखे रहेंगे right theta का सब minus pi to pi लिखे रहेंगे minus should not exceed minus pi pi एठे भी mod z जदि तुम बाहर करियो सेति की आसीयो राइट जदि तुम एठे mod z बाहर करियो तुम तो there are different properties which we can prove using this also shall I do it today because few students are absent today so we'll do it on next chapter okay few proofs are there okay so like we have proved right mod z1 plus z2 square is equal to mod z1 square plus mod z2 square plus two real part of z1 and z2 you can try it let me go to the window right all these proofs we can do by using this also z1 जगह रे r1 cos theta 1 I sin theta 1 लेकिन तब एडा सब प्रूव करो जति कराई ओके दिस इज होमवर्क फॉर यू सिमिलर जहां सब कराई छे बस एडा z2 रो conjugate ना two real part of z1 into z2 रो conjugate thank you so all these proofs whatever we have done right I had given some questions right z1 minus z2 z1 plus z2 two real part of z you can use this also prove this using z1 is equal to cos theta 1 plus I sin theta 1 z2 is equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 r2 plus I sin theta do yourself okay we will do on next chapter I will prove these things we can prove these things using this form and this is also important note z is हम कौन लिख ले r into cos theta plus I sin theta there is another way to represent this ध्यान दें हाँ be focus on class there is another way to represent this that is r e I theta cos theta plus I sin theta e to the I theta cos theta plus I sin theta जगह e to the I theta लिखा जाए परियो
That is finally I am combining z is equal to r into e I theta. So this is called Eulerian form. Eulerian form, right? So जदि लिखिमु write the following in complex number form বা polar form. Question number 1, z is equal to 2 e to the I pi by 2. 2 e to the I pi by 2. जदि एटा कोन दियाला यूलेरियन फॉर्म रे दियाला. माइंड इट e to the I pi by 2 कोन e to the I theta माने कोन लिखले cos theta plus I sin theta. Where e to the I theta is equal to cos theta plus I sin theta. बस that is कोन लिख लिया 2 e to the I theta कोन cos theta plus I sin theta. Right? Theta टा केते थे? Theta टा पाई. E to the I theta cos theta इले जा थिबो एठी टाहा रहबो. Right? I डाउ छाड़ देला और 0 रहिला that is theta. Except I छाड़ देले जहा रहिला that is theta. तो पके दो एठी cos theta वाले केते ला I छाड़ देले के रहिला pi by 2 that is theta. 2 cos pi by 2 plus I sin pi by 2. This is polar form. जैसे complex number form रे मागी थिबो. In complex number form वैल्यू जा पुट कर दो राइट cos pi by 2 केते 0 0 plus I into 1. This is complex number form. Nothing is difficult here. You have to remember e to the I theta माने हमें cos theta plus I sin theta लिख पाए. Right. Next the z is equal to e to the 2I theta. Z is equal to e to the 2I theta. कौन करें I की छाड़ दो that is e to the I into 2 theta. Theta 2 theta right. This can be written as cos r तो नहीं है थे r अच्छी की r नहीं तो cos theta 2 theta plus I sin इधर आओ ये तो फिर दूसरा गुण करो 0 plus I into 2. Correct. This is the pure complex number form, right? So here this is cos 2 theta plus I sin 2 theta. जब e to the I 2 theta को दिया ला, बार 2 I theta दिया. एंगल लगे थे, एंगल डाला 2 theta. तो theta लगा ले 2 theta पड़ी हो. Okay, got it. Sir, in complex number form ना बुझला नहीं. वैल्यू पकड़ ली. इधे हमारे पास ना 2 cos pi by 2 plus I sin pi by 2, right? तो cos pi by 2 वैल्यू पकड़ दियो, sin pi by 2 वैल्यू पकड़ दियो. cos 90 वैल्यू कितने 0. 2 into 0 I sin 90 डिग्री के sin 90 वैल्यू कितने 1. ओके जी वैल्यू पकड़ दी. दूसरा गुण दियो तो 0 plus I into 2 0 plus 2I. कौन सा बुझे कौन सा वैल्यू तो पकड़ दिले. cos pi by 2 वैल्यू sin pi by 2 वैल्यू पकड़ दी. If we will do another example, question. Next question है z is equal to e to the I pi. सब दिया right. आपको हमने फाइल लिखा है. कंप्लेक्स नंबर फॉर्म लिखा है. पोलर फॉर्म लिखा है. इन पोलर फॉर्म करो e to the इन पोलर फॉर्म में कौन थीटा लगे थे पाई
cos theta plus I, right? That is cos pi will get it -1, sin pi will 0, that is -1, z is -1 plus I into 0 लिखियो ऑनलाइन लिखले भी किछ असुविधा नहीं, न लिखले भी किछ असुविधा नहीं, जाउ दिन सब से भल, राइट? So this is in complex number form. In complex number form, right? जल्दी दिया ला another example. Z is equal to 2 e to the I pi by 4, right? दुईटा जो कांस्टेंट पता पड़ला पोलर फॉर्म लिखा, पोलर फॉर्म में लिखा z is equal to 2 पता रहला cos एंगल ला केते pi by 4 एटे थीटा टा pi by 4 plus I sin pi by 4. This is polar form, right? Complex number form. Complex number form মানে কোন cos sin টা হটে দাও, যদি ভ্যালু জানিছো পকেও, ভ্যালু ন জানিছো কোড বাইছো পকেও, রাইট? যদি ভ্যালু জানিছো পকেও, যদি cos তোমরা ওটা কোন দিয়া গেলা ওটা pi by 19 দিয়া গেলা, ভ্যালু জানিছো pi by 19, so don't worry, that question will not come in exam, right? Z 2 cos pi by 4 कितने 1 by root 2 I sin pi by 4 कितने 1 by root 2 sin 45, right? That is root 2 I into root 2. दुटा गुण लो 2 by root 2 ले root 2, 2 by root 2 माने कितने दुटा गुण देले 2 by root 2 माने root 2, सेटा से 2 by root 2 माने root 2, right? Reverse करते रहियो, right? Question. Write the following complex number in both polar and Eulerian form. ठीक cos theta I sin theta लिखियो और e to the right theta लिखियो, right? क्वेश्चन दबो जदी root 3 plus I 1 minus I इति आला पोलर फॉर्म लिखिया तो तुम जानि जो ऑलरेडी, राइट? पोलर फॉर्म रे आगो लिखि दियो, थीटा टा केते लिखि दियो, थीटा देखि e to the right theta लिखि दियो, राइट? पोलर फॉर्म रे आगो लिखि दियो तो कोन करिया z is equal to root 3 plus I शॉर्टकट तो जानि छे 2 रे हटा 2 रे गुंदा नाही तो शॉर्टकट जदी करि पारनो mod z यूज करियो, mod z बाहर करियो, थीटा आर्गुमेंट बाहर करियो, आर्गुमेंट बाहर करि भी कर परियो, two ways, right? So I am using shortcuts, right? So 2 root 3 by 2 I into root 3 by 2 2 cos I into half, sir. Half. ओ नाइन अच्छे हो तब कितने भला है cos pi by 3 I sin pi by 3, right? That is 2 e to the theta ला केतेला दीटा समान थिबो हां इठे खंते वाला थिबो तो खंते वाला कि एटे pi by 3 थिबो सेटे pi by 2 थिबो, that is not possible दादा दीटा थीटा समान दिया, थीटा माने थीटा थीटा दीटा समान दिया हला e to the 2 e to the I theta माने केते pi by 3, so this is polar form, right? And this is Eulerian form. तो
ଏଠୁ ସେଇଠିକି ସେଇଠୁ ଏଇଠିକି ଏଠୁ ସେଇଠିକି କରିବା କଥା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ହବ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ତିନିଟା ଫର୍ମ କରିବେନି। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ओके सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम तीन फॉर्म जानिए बेसिकली वन इज a plus ib, second is cos theta I sin theta, third is e to the right theta. तीन फॉर्म रे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख परिया। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर रो एडिशन जान देले, सब्ट्रैक्शन जान देले, मल्टीप्लिकेशन जान देले, हरण जान देले, रेसिप्रोकल जान देले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जान देले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने कोन? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने कोन? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कहले 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हला 1/5। 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हला 1/5 कहीं गुणिले 1 होतो तातो 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हला 1/5 कहीं दिन जा गुणिले 1 आस्तो जब z is equal to a plus ib दिया हला राइट बा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ने इमिति भी लिख देयो 5 रो पावर -1 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हला 5 to the -1 राइट कहीं 5 को 5 to the -1 रे गुणले 1 राइट z is equal to a plus ib दिया हला सर सेटा पाई बाय 6 हबो ना ओ देखो कोन पूर्वर जो पूरा एडा आईपैड की मैं उधर बैक बैक करी देखी यदि भूल कर देती कर दियो हला z is equal to a plus ib दिया हला देन इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is z to the -1 that is a plus ib रो बार -1 राइट। तो नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आकार तो लिखियो पड़ियो ना तो आर कॉम्प्लेक्स नंबर आकार के लिखियो दैट इज इक्वल टू 1 plus 1 by a plus ib राइट। इमित ले कॉम्प्लेक्स नंबर किमिति हम लिखु जे हम जानि राइट a minus ib रो फुतल गुण दउचे and that is z conjugate right a minus ib टा कोन a plus ib रो conjugate z is equal to a plus ib है a minus ib टा हमर फाइनल आसला कोन a minus ib by a plus ib into a minus ib right तो z रे यदि a plus ib हो z conjugate कोन a minus ib so this is z conjugate ऊपर राइट एठी को अछि z एटा हला z एटा हला z conjugate right that is z conjugate by z into z conjugate है कौन mod z square square सेटा right the multiplicative inverse of z is z conjugate by mod z square therefore multiplicative inverse of z conjugate by mod z square कार करतो क्वेश्चन दादा जा दिन सज तम जदी इमिति मुझे कॉली करी नबो दैट इज ओके फार्मूला पकेबा राइट दिस फार्मूला इज आल्सो ओके क्वेश्चन find multiplicative inverse of z is equal to √3 plus i ए मते एडा भल जे √3 plus i टा लिखिया भाई हैला तो कौन हो
फॉर्मूला पके मेथड 1 multiplicative inverse of z is equal to z conjugate by mod z the square, that is root 3 minus I कौन ला था कौन बोलू हेलो yes speaking yeah I'm doing good, thank you for calling. Not really. Actually, I am in middle of something. Can we talk after half an hour? Is that fine? Yeah. As per your convenient time, you can call me. Yeah, that is fine. After half an hour, yes, you can call at any time. Yeah. Thanks. Okay, so z conjugate is equal to root 3 minus I, right? And mod z square कितने? Root over 3, root 3 square plus 1 square. Root 3 minus I by root 2. by 2. Yes. आसो जेते खेलचो खेल तमे आउर टिके सिंपल करी लिखियो root 3 by 2 minus I. Yes, that is fine. तमे कोई पोलर फॉर्म, that is fine. Cos pi by 6 cos minus pi by 6 plus I sin minus pi by 6. This is polar form, right? Eulerian form लिखे हो तो लिखो is that minus I pi by 6. Jaujin सजो से सिंधी भजो, right? Sir, Tell me. सर आपण टर्मिनल देखा अछि sir clear देखा जाऊनी. Clear देखो. How? It's not possible. सार देखा जाउछि सर. अरे कार गोटे नेटवर्क प्रॉब्लम थियो तम रिस्टार्ट करके ये करो मते देखो क्लियर न हले मते एटे जणा पड़ जिवो एटे ब्लर देखा दियो मो लैपटॉप रे देखुछ ना ब्लर देखा दियो रिस्टार्ट करो जार हो प्रॉब्लम हो हला. So this is 3 forms, right? Any form, right? polar form लिखो बा Eulerian form लिखो. So method 2 कौन जिमि हम करछो बळदिया मेथड 2 टा कौन सब बळदिया मेथड, राइट? बळदिया मेथड है हम एडा ट्रैक्टर यूज करी गले बर्तन बळद यूज करी चाष करिया, राइट? तो z is equal root 3 plus I. Z inverse, that is multiplicative inverse, right? Is equal to root 3 plus I to the power minus 1. That is 1 by root 3 plus I. That is root 3 minus I by root 3 plus I into root 3 minus I. That is root 3 minus I by root 3 square minus 1 square. Root 3 minus I by 2. So the answer, right? That is root 3 by 2 minus I into half. Right? So Jaujin Saja, CSMD Roger.
अच्छा, फाइंड multiplicative inverse of cos theta plus sin theta. Cos theta plus sin theta. R multiplicative inverse. Polar form देइछि, right? Polar form देइछि तार multiplicative inverse दरकार. तार हम कोन करिया? Z inverse केते? 1 by cos theta plus sin theta. Z inverse कोन? Cos theta plus sin theta का पावर -1. That is 1 by cos theta plus sin theta. That is cos theta minus sin theta रे ऊपर तो गुण रहा है. cos theta minus sin theta ऊपर तो गुण रहा है. That is cos theta minus sin theta by cos theta plus sin theta into cos theta minus sin theta. That's cos theta minus sin theta by cos square theta plus minus I square sin square theta. I square का वैल्यू कितने? -1. तो ये कौन है? प्लस है. माइनस That is cos theta minus I sin theta by cos square theta plus I sin square theta. Cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. I square 1 तो 1 पड़ेगा. One. Cos theta minus I sin theta. Right. तार था. नोट कर दिया. लेक्चर है तो I hope all of you have written. Note 1 by cos theta plus I sin theta is equal to cos theta minus I sin theta. Right. सब है मन रखिएगा बेटा. एटा दिए मन रखो. बहुत जगह यूज हो. हैला. एटा करियो कि तमे नहीं मन रखो. हैला. कोड केमिति मु आगु गले नेक्स्ट चैप्टर रे हमें एटा को यूज करिया. नेक्स्ट सिमिलरली cos theta minus I sin theta अछि. तो ऑब्वियसली cos theta plus I sin theta. हैला. देखो तमे सुन दिया cos theta plus I sin theta जति गुणिमु ऊपर cos theta plus I sin theta तळे cos square theta plus sin square theta. तो cos theta plus I sin theta. Okay, so these two formulas, remember these two as a formula. 1 by cos theta plus I sin theta cos theta minus I sin theta. 1 by cos theta minus I sin theta cos theta plus I sin theta. Or this is 1 by e to the I theta. Right? That is e to the minus I theta. 1 by e to the minus I theta is equal to this is this, this is this. Polar, sorry, Eulerian form में लिखते हैं. माने रखे टाइप. माने कितने रखियो? e to the I theta का पावर -1. इनकी कोई करियो. एटा को लिख दिया. e to the I theta का पावर -1 माइनस टा गुण जाए. राइट. डिग्री टा गुण जाए. राइट. that's कितना हो? e to the minus I theta. मन रखे जाओ जिन सजो सीन सारा जिन मन रखता तो मन. Okay, so yeah, there are two formulas.
गुणी दिटा सेमती गुणागुणी सरा सब तुम करो हला so join please join again the class is going to end now please join again